सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ टू फोकस। मतलब हम पूरी कोशिश कर लेते हैं, हम सोचते हैं सुबह से, या टुडे आई एम गोइंग टू डू दिस दैट एट एनी कॉस्ट, आई एम गोइंग टू फोकस, बट स्टिल हाउ टू फोकस? दैट क्वेश्चन अराइजेस लाइक इवन व्हेन यू आर 10 years old, or maybe you are even 90 years old. This question always arises that I plan but I'm not able to focus. There are many things, हमारे पास वो पांचों ओपनिंग्स है, वो पांचों चीजें हैं जिसके सपोर्ट से हम फोकस कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू गेट इट फ्रॉम आउटसाइड। द बेस्ट पार्ट ऑफ फोकस इज दैट हम हमेशा ये सोचते हैं ना, फोकस करना है मतलब या किसी से सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। वी हैव इट इन अस। एनी गेस? क्विकली, एनी गेस इन द चैट विंडो? मैंने एक हिडन क्लू ऑलरेडी दे दिया है बातों बातों। आई हैव ऑलरेडी गिवन अ क्लू। Come on. Even if it's a wrong answer, just attempt. Come on, quickly, I'm waiting. Ah, Jyoti ji, perfect. Perfect. Senses. Five senses. It is so very correct. It is so very correct. So very correct. How to focus and be free of unwanted thoughts when you want to do something very important. एंड आप वो जब कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते ना, यू डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। आई मीन यू रियली वांट कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और करना बहुत जरूरी है, फोकस बहुत जरूरी है। आई टेल यू, सिंपली ओपन योर फाइव सेंसेस इन दैट डायरेक्शन of whatever you need to do. It can be like simple if you're reading a book, maybe आप ड्राइविंग सीख रहे हो, maybe you are attending a meeting, maybe you're making an important decision of your life or anything. Maybe you're taking a class, maybe you're exercising, maybe you're having a deep conversation with your spouse, your life partner, or anything where you want to give your best. You will start using your five senses. सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ कितने लोग अभी इस वक्त अपने पांचों सेंसेस यूज कर रहे हैं मेरा सेशन सुनते वक्त? हाउ मेनी? सो लाइक यू, आप कुछ भी ऐड कर रहे हो ना, आपके फाइव सेंसेस ओपन होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कोई कोई सिचुएशंस में यू कैन नॉट यूज फाइव सेंसेस, बट एटलीस्ट यू कैन यूज मैक्सिमम एंड डोंट गेट डाइवर्टेड। लेट्स अंडरस्टैंड। एट मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव सीन दैट जब एक बहुत अच्छा सिंगर होता है, एंड व्हेन ही और शी सिंगिंग, she or he automatically just closes his or her eyes. यानी आप हमेशा देखते होंगे बहुत जो बेहतरीन सिंगर है, वो गाने के वक्त अपनी आंखें बंद कर देता है ना? वाई? वो चाहता है उसके जितने भी सेंसेस है ना, वो जुट जाए उस सिंगिंग में, ताकि उनका सुर जो है बहुत अच्छा हो जाए, सो दैट दे सिंग वेल एंड इट टचेस योर हार्ट। हैव यू फेल्ट दैट? Somebody sinking with really with deep, deep from inside, and you are sensing that, you are feeling that. It is really, I'm telling you, it's impossible to solve a math calculation, a mathematics calculation in your mind when there is lot of noise around us. बहुत ज्यादा जब आवाज होता है ना, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप मैथ सम सॉल्व कर सको। इट इज डिफिकल्ट डेफिनेटली। एक एक कोई होगा जीनियस हु कैन डू इट, बट जनरली यू कैन नॉट। You are diverted. We are not able to sit in one place until unless you don't remove the food stuck in your teeth. How many of you have gone through this situation कि कुछ दांत में अटका हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या काम कर रहे हैं, पर वहां ध्यान है ही नहीं, हमारा पूरा ध्यान वो कब वो चीज निकलेगा दांत में से, when it will get removed. This is something which comes naturally to us, running our mind with help of our senses. Our senses is a must. You have to involve it in anything what you do. Only thing the right focus happens.
Involving your senses in your work is highly very important. I'm repeating again. If you try to complete maybe your office work or PPT in sitting in a cafeteria, I'm sure you won't be able to complete even 5 slides. Why? Because the smell around it won't let you maybe. See, sometimes they are making some different kind of coffee and that sense is coming and you're not able to do it. है ना? Divert हो जाता, हाँ, nice fragrance. Maybe you're when you're trying to meditate in a park and when the children are making noise and everything, you won't be able to have a good time meditating there. Same way, maybe you're running or jogging and a mosquito bites you. Your whole attention will go to that bite, scratching your arm. Even if you're sitting in a theater watching a movie, even one mosquito bites on your legs. Pura dhyan. Oh my God. Machhar ne kaat liya. So the focus is shifted. This is what is happening. This is what is happening. If your senses are exposed to other things, you are trying to get a job done. You are practically multitasking. What I'm saying is, आप एक साथ बहुत सारी चीजें करने जा रहे हो, but the fact is, multitasking is a myth. आप 100% एक चीज को दे नहीं पाओगे और उसका आउटपुट एक्चुअली अच्छा नहीं आएगा. Yeah, definitely. It's like the research tells us when a person tries to do multitask, his IQ drops by 15 points, which is found in a drug addict or a sleep deprived person. It's very, very difficult. मतलब सही में drop हो जाता है. Sometimes it becomes difficult to involve all our senses. I agree. I agree. कि सही में हर एक्टिविटी में आप आपके 5 senses यूज नहीं कर सकते. Obviously, you can't lick a book when you're reading it. Yeah, you cannot lick it to have the taste senses. How many of you know your 5 senses? Ears, nose, smell, taste, and touch. These are our 5 senses. So when you're reading a book, you can touch, you can see, you can read it loud and hear, but you can also smell, but you cannot taste. But what I'm saying is, it's okay. At least make sure when you're reading, you're not thinking about the food, what you ate in your lunch or dinner. That you can do, na? मतलब आप जब book read कर रहे हो, at least just focus on that. At least add your 3 to 4 senses to it so that you don't remember any other pop-ups. Are you getting it? Maybe you are sitting in a office meeting. I understand. You cannot just go and smell the board, right? Or anything there. But you can avoid sitting to a person who has good fragrance because a good fragrance will divert your mind again. Trust me, it happens. आप lecture भी कभी attend करो. Maybe you're hearing this today. Okay, you're hearing me. At least don't fidget with the pen or anything in your hand. Just be focused when I'm saying. Keep your ears open, your eyes open. At least that you can do. If not all the 5 senses. This is very important now. Always sit in a table whenever you want to do anything important. Sit on a table where you can have a wall which is clear. ऐसा रूम जहां आपके आंखों के सामने ना सब कुछ क्लियर है. देयर इज नो अदर थिंग, नॉट इवन योर विजन बोर्ड, so that you know when you're doing something important, it's like every time you're looking at the vision board and you're getting diverted. So always remember you have a plain wall wherever you're sitting to learn so that your senses are not diverted. It's supporting you. So there are a lot of people walking around and all. Have that private place when you want to do something important. I will definitely make sure that my table is clutter free. Everything is like organized so that I'm focusing. I would check कि कुछ फूड अटका हुआ नहीं है. I would check कोई बैड स्मेल तो नहीं है रूम में, क्योंकि अगर बैड स्मेल होती है तो भी मन डाइवर्ट हो जाता है. I will always see कि I switch off the bell, so that it doesn't disturb me when I am talking to you all. So that all my 5 senses mostly are, I'm just here focusing, talking to you and explaining. At 180 degrees now,
You should only look into that book if you're reading or the screen now. Straight away, only into that. पूरा ध्यान पूरे five senses only where what I'm talking about. Imagine a boy is talking, or a man is talking to his wife. What is the best thing how you can focus 100% or at least 90% or using your five senses? So like maybe आपकी वाइफ बहुत अपसेट है, okay, very very upset, and you decide to talk it out. So how will you create that environment? Definitely you will sit in a room जहाँ कोई disturbance नहीं है. You will look into her eyes. Okay, so आपने environment create कर दिया. You're looking into her eyes. You're holding her hands. Maybe you're getting closer and talking to her. Maybe you're also experiencing her fragrance at that moment. Maybe you're also just doing like that over her head or her cheeks. You would try to use your five senses at that moment. Trust me, your fight of 2 hours will get solved in 30 minutes. Or maybe your fights of 1 or 2 days will get over in 30 minutes when you add your five senses to that person when you want to get things solved. By opening all your five senses in the same direction, you will surely be able to stop and do not any other foreign thought come into your mind, entering into mind and disturb you. It's very important. You can either make your mind your best friend by controlling it, or you can make your mind your worst enemy. What do you love to do? What do you love to do? या तो आपकी ब्रेन को आप आपका बेस्ट फ्रेंड बना दो, तो वो आपके हिसाब से चलेगा. उसके लिए आपको आपके फाइव सेंसेस यूज करने पड़ेंगे. हमेशा बार बार फोकस जाएगा उड़ते हुए. इट्स लाइक अ बर्ड, इट विल फ्लाई, गेट इट बैक, इट विल गो, गेट इट बैक. द वे वी ब्रीथ, यू लीव इट, बट अगेन यू टेक इट. उसे बार बार अपने पास लाना होगा. The brain has to understand when I focus. When I'm talking to you, I'm talking to you. Imagine I'm talking about all this and I'm like, yeah, today, you know what, you should do this and this is not good. You should look into her eyes and speak, and you can hold her hand and speak. You can also smell her. And are you getting aligned with me? Are you getting aligned with me? Not possible. It happens with me also. आप लोग भी जब बात करते हो ना, एट टाइम्स मे बी यू आर डूइंग समथिंग एल्स, और वो करते करते आप मेरे से बात करते हो, मैं भी डाइवर्ट हो जाती हूँ एट दैट मोमेंट. मेरा इंटरेस्ट कहाँ चला जाता है पता है? आप क्या कर रहे हो उस पर, क्या बोल रहे हो उस पर नहीं. एंड देन आई गैदर माई सेल्फ, कम, लिसन टू हर वर्ड्स, लिसन टू हिज वर्ड्स, आई हैव टू कम बैक. सो जब आप लोग का वीडियो ऑफ रहता है ना, जैसे इस वक्त है, सोम्या जी, किंजल जी, सौरभ जी, पूजा जी एंड विनर रोहिणी जी, जब वीडियो ऑफ रहता है ना, तो आई माई फोकस इज नॉट ऑन योर 100%. लेट मी कन्फेस दैट. मेरा फोकस आप लोग पे होता ही नहीं है. मेरा फोकस उन लोगों पे ही होता है जिनका वीडियो ऑन होता है, एंड आई कैन सी देयर एक्सप्रेशन व्हेन आई एम एक्सप्रेसिंग समथिंग. सो इज अ गुड रिसीवर. यू शुड टेल. वी, बोलो हाँ हम अच्छे रिसीवर है. बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ मी व्हाट आई एम सेइंग. अब जब मैंने फाइव सेंसेस के बारे में बात करा, आपने आपके हाथ का काम छोड़ दिया होगा. ईयर्स जैसे खुल गए होंगे, 1 इंच बढ़ गया होगा. स्मेल अच्छी होने लग गई होगी, लाइक द ब्रीदिंग प्रोसेस. आंखें ऐसे हो गई होंगी, साइज जो इतनी थी वो इतनी हो गई रहेंगी, और आधा इंच बढ़ गया होगा. एंड आप महसूस कर रहे थे वॉट एवर आई वाज सेइंग. दिस इज कॉल्ड यूजिंग योर फाइव सेंसेस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब कोई कोच कर रहा है या आप कुछ कर रहे हो, यूज योर फाइव सेंसेस. दे आर योर्स. यू डोंट नीड टू रेंट इट आउट. दे आर ऑल योर्स. Nobody else.
किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं। तो एटलीस्ट इन योर टास्क वॉट एवर यूर डूइंग प्लीज फोकस. I understand sometimes we have to do multitasking, but remember one thing in your mind. Multitasking is not going to give you that powerful results what you expect. It will give you results. It will give you results, but it won't help you to become a master. वो जो बेस्टेस्ट होना है ना, वो नहीं होगा. बेटर हो सकता है, गुड हो सकता है, जो बेस्टेस्ट होना चाहिए वो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपका फोकस बहुत सारी चीजों में बट चुका है. अब 50-50-50-50-50 करोगे तो 100% तो नहीं आएगा रिजल्ट. वो 50-50 आएगा. चलो 70 आ जाएगा. सो व्हाट आर यू गोइंग टू यूज नाउ फ्रॉम टुडे? Even when you're talking with your spouse, your children, when you're cooking, when you're driving, when you're reading, when you're learning, when you're coaching, when you're doing anything, even when you're bathing. Now let me to get very straight with this point. Even when you sit on your WC seat, best example I can give यार, वहां भी आप लोग डाइवर्टेड रहते हो. How can you take this? How can you take this? This is senseless. How can you take this? Let me tell you, your gut is not getting drained up. I'm telling you, आपका gut clear हो ही नहीं सकता है. There will be always some percentage left inside your stomach. It is scientific and वो सड़ के आपको डिजीज पैदा कर रहा है. How can you have this or this screen when you're eating food? How can you do this to yourself? How can you disrespect yourself, your body, and the food together? And this is multitasking. कि वो एक चीज है, हर किसी को डिसरिस्पेक्ट देने के लिए पूरी मदद लगा देता है. हाउ कैन यू डू दिस? सीरियसली. दैट फूड टाइम इज योर टाइम, योर कनेक्शन विथ योर बॉडी, विथ योर सेंसेस. You literally see it, smell it, taste it, touch it, and you hear when you're chewing. You are supposed to focus. I am telling you, when you focus and you eat, I challenge you, your weight will come in control. I challenge you. This is my personal experience. दुनिया इधर से उधर हो जाए, आई विल नॉट वॉच एनीथिंग व्हेन आई एम ईटिंग. दिस आई हैव लर्न फ्रॉम ऑल दी स्पिरिचुअल गुरुज. बिकॉज जो आप खाते हो वैसे आप बन जाते हो. आप जो चीज देखते देखते खाते हो वो चीज आपके पेट में चला जाता है. नाउ इमेजिन यू आर वॉचिंग दोज न्यूज चैनल व्हेन यू आर ईटिंग. Everything is going in your subconscious mind, knowingly, unknowingly, helplessly. You're watching those reels, it's going inside you. Your brain is focused not in digesting the food you ate, it is focused on the news what you're feeding because that is easy for him. ब्रेन के लिए वो आसान हो जाता ना, अरे सिर्फ न्यूज लेना रख देना है. पर जब आप खाना खाते हो तो ब्रेन आपका जाता है, वो सेल्स में जाता है और वो खाने की तरफ जाता है और उसके ऊपर काम करने लगता है. डाइजेस्ट, अच्छे न्यूट्रिएंट्स ले लो, खराब चीजें निकाल दो. वो आपका ब्रेन पूरा जुड़ जाता है आपके खाने के ऊपर वर्क करने के लिए. बट आपने उसको कैसे डिसइंटरप्ट कर दिया? दिस इज लॉजिक, दिस इज साइंस. It will work. And then you come, ma'am, I'm eating only this much rice. In fact, rice तो मैंने छोड़ दिया, मीठा भी छोड़ दिया. I mean, instead of having two chapatis, I'm having only one. But still my weight is ज़्यादा or I'm not getting that result even after this diet. So ultimately I left diet. The fault is not of the food. The fault is how you're eating the food. Because definitely आप ध्यान दीजिए, when you're watching something and eating ना, actually you're not chewing it properly. वो जो खाना चबाने का तरीका होता है वो अच्छे से नहीं होता है. You try to gallop things at most of the time, or maybe you're talking over the phone while eating. You need to talk, so you need to gallop it fast. Even water, somebody is talking to you, हाँ बोल. अरे भाई,
वो रुक सकता है 2 मिनट। 2 मिनट में वो क्या कर लेगा? ड्रिंक योर वाटर, सिट डाउन, हैव प्रॉपर वाटर। डोंट टॉर्चर योर बॉडी लाइक दैट अननोइंगली। डोंट टॉर्चर योर ब्रेन। फोकस हट गया ना, सो दीज, अगर आपने ये पहले ध्यान देते हो ना, लेटर एज में, like it's like above 60, you will still have good brains and good memory. Have you seen people, even at their 80s and 90s, they remember each and everything with date. Go and ask their routine. They didn't have TV at that time. They didn't have mobile at that time. When, the brain was very sharp. At that time, they didn't have. They got that mobile too late. We got it in maybe like 30s, when we were 30, if you are of my age and all, 30 40 में मिला होगा। हमारे बच्चों को तो लाइक आई थिंक, आई सी मम्मीज, ओ कम ऑन बेटा ईट, सी कार्टून, सी सॉन्ग्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हाट वन ऑफ द मॉम टोल्ड मी, मैम मैं कार्टून नहीं लगाती हूँ, मैं तो भगवान के भजन लगाती हूँ। आई सेड वो आप गा ही सकते थे, और गाना ही क्यों है? यू कैन टॉक टू योर चाइल्ड समथिंग गुड एट दैट मोमेंट। आप केपेबल नहीं हो बात करने के, why you need that support, and now you introduced it proudly saying मैं तो अच्छी चीजें बताती हूँ ताकि वो ही जाए उसके ब्रेन में। You lost your connection with your child, and the child got very well connected to this. मेरे बच्चे मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते मैम, मैं क्या करूं, मुझे कुछ इलाज दो। अब मैं क्या इलाज दूं जब आपने ही उनके ब्रेन में फिट कर दिया ये चीज? What can I do? I need to correct the parent first, not the child. The child was not born with that talent कि मोबाइल देखने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा। वो तो बोल भी नहीं सकता है बेचारा। 1 year old child, I'm looking parents doing that. अच्छा, one more intelligent parent came to me from my family only. I solve maths problems while eating with that child on mobile only. A for apple, B for ball, and then 1 plus 1 is 2 and all. I said, my God, इनको हम बीट ही नहीं कर सकते, ऐसे पेरेंट्स को हम बीट ही नहीं कर सकते। They have they have everything to say. I said, very good, perfect. आई होप आपके पेरेंट्स आपके साथ ऐसे करते, तो आपका भी कनेक्शन ऐसे ही दूर हो जाता था, मोबाइल के साथ ज्यादा हो जाता था। आई विश। Why their parents are very close, even though they are strict, but you trust them and they trust you. Even you talk less with your parents, okay, but still they trusted you and you trusted them, कि कुछ भी हो जाए वो हो गया। आजकल पेरेंट्स की गारंटी बच्चे नहीं लेते। आई डोंट गारंटी व्हेन आई गो होम माय मदर विल नॉट शाउट or my father will not shout. I have no guarantee, Papa. Yeah, your children says that. Trust me, the survey is saying that. आपको ऐसा लगता है हाँ मेरा बेटा मेरा ही है, ऐसे मुझे ही आके शेयर करता है। प्लीज डोंट बी अंडर दिस परसेप्शन इफ यू हैव नॉट क्रिएटेड दैट एनवायरमेंट। ट्रस्ट मी, दे टेल देयर फ्रेंड्स, अरे यार प्लीज कर यार, घर जाके पता है ना मेरी मम्मी कैसे, मेरे पापा कैसे। लिटरली दे से दैट। हाउ would that connection build? Because you're not using five senses, even in your relationship, even in your health, even in your career. How many of you really go at your table or desk or office, wherever you work, whatever you work, even for the homemakers, I said, how much of your five senses you're using it? कितना आप आपके पांच सेंसेस सही में यूज कर रहे हो? अगर यूज करते तो आपको रिजल्ट्स 10 टाइम्स ज्यादा मिलता। सच में मैं कह रही हूँ। नाउ ट्राई दिस, जस्ट ट्राई इट। I challenge you, in 30 days, you will start getting results. Use your five senses. So, like, even if you're thinking, I'm not married, so can I think about, a life partner? Great, I would say it's a great idea. Use your five senses. Trust me. Yeah, he looks like that. He will smell this way. I'm hearing the words, what he's saying. You can literally visualize.
your life partner who's not there at present but is coming in future from future. You can visualize with your five senses. And trust me, that will work. So, in addition, you remember I had told one kind of manifestation is you can draw what you want to achieve. Even if your drawing is not good, that's okay. The point is, when you draw with all your five senses, it works. Literally, a draw karo. Yeah, this is me. And I'm literally visualizing, yes, I'm wearing this kind of thing. And my life partner is going to look this way. And maybe he has a ring in his hand. I'm feeling that the ring, is of my size. I'm watching that. I can smell that fragrance between us. I can feel that touch, the way he's touching my finger and, making me wear that ring. This is all visualization, but using your five senses and putting it down on a paper. Who will stop you to achieve? इसमें कोई ग्रह घरमान एंड वो कुछ भी काम नहीं आएगा. आपके फाइव सेंसेस ही काम आएंगे. एंड इट्स रिटन इन ऑल स्पिरिचुअल बुक्स. आपको दिया क्यों गया है, आप मुझे बताओगे? ये फाइव सेंसेस क्यों दिया है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. We only humans have got all these five senses. And the saddest part is we humans are only not using it. और जिनको two senses है, three senses है, they are 100% using it. Isn't that a really funny? हमको मिला है और हम यूज नहीं कर रहे, और जिनको अधूरा मिला है वो पूरा यूज कर रहे हैं. So, yeah, being a human also, like, you're wasting our life. So much you can create in your life, so much you can create for others, but we are just wasting time. And simple thing है, मैंने तो कुछ कहा नहीं ना. मतलब कोई जादू टोना करना है या कुछ ऐसे करना है, होम हवन फास्ट करना है, कुछ भी नहीं बोला मैंने. Nothing of that sort. I just said, if you want to focus, use your five senses. That's it. Even if you're like, want to read a book, you need to create silence. You need to check the environment is good or not, the light is good or not. You need to say you are in the awakening state or not. ये आपको सब ध्यान रखना पड़ेगा. पहले पूरा क्रिएट कर दो एंड फिर फोकस करने बैठ जाओ, ताकि आप डाइवर्ट ना हो. वेरी इंपॉर्टेंट. This goes also for the Reiki students who says, I cannot meditate. You cannot meditate because you're not using your five senses. It's very simple technique. इसलिए आपको याद होगा, मैं बार बार कहती हूँ, the moment the thought comes, cancel, focus on your breath. I'm letting you come back to your senses, back to your senses. Remember hypnosis session में क्या करती हूँ मैं? ट्रांस लेवल पे लेके जाती हूँ. तो feel, visualize, hear, touch that, look at it. I'm using your five senses so that it's easy that you can visualize and achieve that goals. Same thing you have to do every day. तो समझ में आ गया? Easy, very simple. कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, किसी को डांटना नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है. जस्ट यूज फॉर योर सेल्फ. ऑल गुड.